Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are well. In the previous lecture, we have completed lesson number 3, force and pressure. Now, in this lecture, we will solve some of the numericals and exercise. Okay, so let's start. Here, the first numerical is the area of the bottom of a tiffin box is 0.25 meters square and weight is 50 Newton. So what is given? Area A is equal to 0.25 meters square and weight is given. Weight is nothing but the force, because weight is given as mass into gravity, mass into acceleration due to gravity, and that is given as 50 Newton. Now we have to calculate the pressure exerted by the box on the shelf. So we know that the formula for the pressure is force upon area. So force is given here 50 upon area is 0.25 meter square. So here, to solve such type of fractions, there is a trick that if there are some digits after the decimal point, then you can add the number of digits. For example, here the two digits are taken after the decimal point, so add 2 digits here and then cancel this decimal. Okay, now what you get? 5000 upon 25. Okay, now the answer will be 25 to the 50, 200. Okay, so pressure is 200 Pascal. Okay, now our next question is to calculate the relative density of iron if the density of water is 10 cube kilogram per meter cube and the density of iron is 7.85 into 10 power 3 kilogram per meter cube. So we have to calculate here the relative density of iron. So what is the formula for relative density? The formula for the relative density is density of a substance divided by density of water. Here the substance is iron, so we have to calculate the relative density, means we have to divide the density of iron by the density of water. The density of iron is given as 7.85 into 10 cube kilogram per meter cube. So 7.85 into 10 cube kilogram per meter cube divided by density of water is 10 cube kilogram per meter cube. So 10 cube cancel from numerator and denominator and we get 7.85. There is no unit of relative density because it is the ratio of two similar quantities. Okay, now our next question is the area of a tip of a screw is 0.5 millimeter square. So the area is given in millimeter square. Area is equal to 0.5 millimeter square. So how many millimeters are in 1 meter? So 1 meter is equal to 1000 millimeter. So 1 millimeter will be equal to 10 raised power minus 3 meter. So here area is given in millimeter square. So 1 millimeter square will be equal to this square, means 10 raised power minus 6 meter square. So we have to convert the millimeter into meter, the standard SI unit. Whatever the quantity is given in the question, they all should be in SI unit, all in SI unit or all in CTS unit. So we prefer to convert all the quantity in SI units only. So we have converted millimeter square into meter square, SI unit. So here area is converted into SI unit. Here 0.5 into 10 raised power minus 6 meter square. This 10 raised power minus 6 comes from here. Okay, we have converted millimeter square into meter square. Now the weight of this screw is given as 0.5 Newton. This is already in SI unit, so there is no need to convert it. Now we have to calculate the pressure. Pressure is nothing but the force applied per unit area. The force is 0.5 Newton
and area is also 0.5 into 10 power minus 6 meter square. So 0.5 0.5 cancels from numerator and denominator, and we get 10 power 6. This is 10 power minus 6 in the denominator, so when it goes in the numerator it becomes 10 power plus 6. Okay, so 10 power plus 6 Newton per meter square or 10 power 6 Pascal is the required answer. Okay, now let's see the solved example number 4. You can see on page number 21 the solved example 4 is given. The question is asking that mass of a block of a metal is 10 kg. The block of a metal is shown in the question. In this figure you can see the block of metal is given and its mass is 10 kg. Mass of this block is 10 kg. 10 kg, 10 kilogram, and the dimensions of are length 50 centimeter, breadth is given 10 centimeter, and height is given 20 centimeter. The length is given 50 centimeter, this breadth is given 10 centimeter, and the height of this block is 20 centimeter. Here the one thing is given that the mass is given in the SI unit and the dimensions are given in CGS unit, centimeter. So first of all we have to convert these CGS unit, these dimensions into SI unit. We have to convert the centimeter into meter. So 50 centimeter when converted into meter will get 50 centimeter will converted into meter. How will convert centimeter into meter is multiplying by 10 raised power minus 2. 50 into 10 raised power minus 2 is equal to, when you multiply something by 10 raised power माइनस समथिंग, 10 की 10 की कोई माइनस की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारा डेसिमल पॉइंट उतने डिजिट पीछे जाता है. अभी हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ था, अब 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हुआ कि डिजिट हमारे यहाँ 1 2 डिजिट पीछे गए, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर. लाइकवाइज आवर ब्रेथ 10 सेंटीमीटर विल इक्वल टू 0.1 meter. 20 centimeter will become 0.2 meter. So clear how we converted centimeter into meter? We have just multiplied it by 10 raised power minus 2. Now the next thing that is asking in the question is, if the metal block is placed on the following surface on the table, find out on which of the surface ABCD, CDEF and BCFG will the pressure exerted on the table will be maximum. Here it is asking that on which side the pressure will be maximum. हम इस ब्लॉक को कैसे रखेंगे टेबल पे कि उस साइड पे प्रेशर मैक्सिमम होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑन ईच साइड. ABCD, CDEF एंड BCFG. किस तरह से हम इस बॉक्स को रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे या इसको नीचे रखेंगे या इस साइड को नीचे रखेंगे, कैसा रखेंगे इस बॉक्स को कि वहाँ पे हमारा प्रेशर मैक्सिमम होगा उस टेबल के ऊपर. तो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑन ईच साइड ABCD, CDEF, BCFG and we have to compare that on which side the pressure is maximum. Okay, so for finding the pressure, first of all we have to find the force. So force is not given. Force is nothing but the weight of the object. So weight is mass into acceleration due to gravity. Mass is given 10 and acceleration due to gravity has a constant value 9.8. So the force becomes 98 Newton. Okay, now the area for the side ABCD, we will calculate the area. See the side ABCD, the dimensions are 50 into 20, 50 into 20. So we have converted 50 into 0.5 meter into 20. We have converted 20 into 0.2 meter. So the area will become 0.1 meter square. We have calculated the area of side ABCD. Now the pressure applied on side ABCD will be equal to force applied per unit area. Force is, we have calculated the force as 98 Newton and area we have calculated at 0.1 meter square. So the pressure will be
here is one digit after the decimal point, so above we will take one digit after the decimal point, 98.0 upon 0.1. So one digit after the decimal point, we will calculate the we will cancel the decimal from numerator and denominator, and it will become 980 upon 1, that is equal to 980 Newton per meter square. So pressure on the side ABCD is 980 Newton per meter square or 980 Pascal. The rest of the side, the pressure for the rest of the side is homework for you, because it is a solved example and you have to calculate by your own, and you will find the pressure on the side CDEF will be equal to 1960 Pascal, and the pressure on the side BCFG will be equal to 4900 Pascal, and we have calculated the pressure for the side ABCD as 980 Pascal. So you can see that the maximum pressure is on this side BCFD, on this side BCFG. So this is the required answer, that the maximum pressure is on the side BCFG. Maximum pressure is on the side BCFG because here the area is small. Okay. Now dear students, let's come to the exercise. The first problem is the SI unit of force is. We know that the SI unit of the force is Newton and Dian is the CGS unit of the force. So the SI unit of the force will be Newton. The second question is air pressure on our body is equal to atmospheric pressure. Okay, the pressure that is exerted on our body is due to the atmosphere of Earth. So that is the atmospheric pressure. The third question is for a given object the buoyant force in liquid of different density is different. एक गिवन ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका बायोएंट फोर्स डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट बायोएंट फोर्स होता है, हर डिफरेंट लिक्विड के लिए. फॉर एग्जांपल वाटर के लिए बायोएंट फोर्स डिफरेंट है, ऑयल के लिए बायोएंट फोर्स डिफरेंट है. सो डिफरेंट डेंसिटी के लिए, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए बायोएंट फोर्स भी डिफरेंट होता है. इफ़ वी आर टेकिंग द सेम ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई एक ही चीज़ ले रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल ही ले रहे हैं या फिर कोई वुडन बॉक्स ही ले रहे हैं, तो डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर उसका बायोएंट फोर्स भी डिफरेंट होगा. ओके, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पास्कल. ओके, नाउ मैच द पेयर. फ्लूइड इज द सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन. फ्लूइड हम कहते हैं liquids and gases, and liquids and gases apply the same pressure on the walls of the container. Okay, किसी एक पॉइंट पे हम देखें तो गैसेस भी होती है और लिक्विड भी होती है, जो अगर उसका कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर किया तो इट अप्लाइज द सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. अब आप बोलोगे कि बॉटम पे तो लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होता है, अब यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि सेम प्रेशर होता है, तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि अगर हम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारी गैस है, तो गैस का तो समझ में आता है कि हर डायरेक्शन में उसका प्रेशर सेम होता है, लेकिन लिक्विड का कैसे सेम होगा. तो अगर हम इसका कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किए लिक्विड का, तो यहाँ पे इसका प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम है. यहाँ से अगर एक पॉइंट कंसिडर किए तो यहाँ से भी वो उतना ही प्रेशर डाल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. यहाँ पे इसका प्रेशर मैक्सिमम है, लेकिन अगर एक पॉइंट कंसिडर किए, कहीं का भी एक पॉइंट हमने कंसिडर किए, तो उसका जो प्रेशर होगा वो हर साइड से, हर डायरेक्शन में सेम होगा. अगर यहाँ से भी हमने लिक्विड का कंसिडर किया तो हर डायरेक्शन में उसका सेम होगा. कोई भी एक पॉइंट लेना है हमें, तो उस पॉइंट का प्रेशर विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन. ओके, सो फ्लूइड हैव द सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. ब्लंट नाइफ, जो हार्ड नाइफ होता है, ब्लंट होता है, जंग खाया हुआ होता है, तो इट अप्लाइज अ लो प्रेशर ऑन द वेजिटेबल्स. इट अप्लाइज द लो प्रेशर. शार्प नीडल, कोई बहुत ज़्यादा शार्प नीडल है, तो इट अप्लाइज द वेरी हाई प्रेशर. वी हैव लर्नड इन द लेक्चर्स. रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक
gravity. Okay, specific gravity. Hectopascal is the unit of atmospheric pressure. Okay. Now answer the following questions in brief. Plastic cube is released in water. Will it sink or come to the surface of water? प्लास्टिक क्यूब दिया हुआ है, उसको हमने पानी के अंदर रखे, सो इट विल फ्लोट और इट विल सिंक. ये फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, डूब जाएगा या तैरेगा? It will float on the surface of the water. Why it will float? Because the density of plastic is very small. Density of plastic is smaller than the density of water, so it will float on the surface of the water. So that's the reason. Okay. The second question is, why do the load carrying heavy vehicles have large number of wheels? तो heavy vehicles होती है, load carrying heavy vehicles like trucks जिस पे हम लोड लेके जाते हैं, so and heavy vehicles मालगाड़ी जो होती है, तो उसमें इतने सारे व्हील्स क्यों होते हैं? वाई द व्हील्स आर लॉट ऑफ व्हील्स देयर आर? द रीज़न बिहाइंड दिस, दे हेल्प टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. We have learned in the previous lectures that if the area of contact is large, the pressure will be less. So to reduce the pressure on the road, the tires are more in number. Okay, so that's the reason. The third question is, how much pressure do we carry on our heads? Why don't we feel it? हम अपने ऊपर कितना प्रेशर कैरी करते, कितना प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई होता है और हम उसे फील क्यों नहीं करते? सो we have learned that the atmospheric pressure is applied on our body, so it is also applied on our head. So the atmospheric pressure is applied on our head. We don't feel that pressure because there is also a pressure inside our cavity. There is also air inside our cavity and there is also a pressure inside us. कैविटी भी तो है हमारे अंदर और हमारे अंदर भी कुछ प्रेशर तो है. देयर इज़ अ ब्लड, देयर इज़ कैविटी एंड देयर इज़ एयर इनसाइड आवर बॉडी. सो दैट प्रेशर इनसाइड एंड द प्रेशर आउटसाइड इज बैलेंस्ड एंड वी डोंट फील द प्रेशर ऑन आवर हेड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is, why does it happen? A ship dips to a larger depth in fresh water as compared to the marine water. एक शिप है, वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा डिप करता है, ज़्यादा सिंक करता है एज कम्पेयर टू मराइन वाटर. वाई डज इट हैपन? वी हैव लर्न दैट द बायर्न फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. हियर द फ्रेश वाटर हैव द लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू मराइन वाटर. मराइन वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, सो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस लिक्विड पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक की फ्लोट करेगा एज कम्पेयर टू लोअर डेंसिटी लिक्विड्स. इसी वजह से क्या होता है कि खारे पानी के ऊपर चीज़ें तैरती है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर. इन मराइन वाटर द थिंग्स फ्लोट ईजिली दैन एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर. द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉड एट इट्स बेस. we can observe that when we see the dam, we can observe that the walls are broad at the bottom. जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं तो उसकी वॉल्स ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है. ऐसा क्यों होता है? वी हैव स्टडीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़ दैट लिक्विड अप्लाई द मोर और द हाईएस्ट प्रेशर एट द बॉटम. जो प्रेशर पे ज़्यादा बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती हैं लिक्विड, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है तो वॉल तो टूट जाएंगी ना. तो इस वजह से वॉल्स ब्रॉड होती है एट द बॉटम ऑफ ए डैम बिकॉज लिक्विड्स अप्लाई the greater pressure at the bottom, so the walls of a dam are made broad at the bottom. Okay, the fourth question is, if a stationary bus suddenly speeds up, passengers are thrown in a backward direction. So why this happens? अगर हम किसी कार में जा रहे हैं और ये अचानक से उसकी स्पीड बढ़ा देता है तो we feel a backward push. So why we feel? We have learned the concept of inertia that our body was, हमारी बॉडी को वो हैबिट हो गई थी आराम चलने की, और ये जो प्रॉपर्टी थी इसे हम कहते हैं इनर्शिया. कोई एक चीज़ की हैबिट हो जाना, कोई एक स्टेट की हैबिट हो जाना. अपनी एक स्टेट थी कि वो उसी स्पीड में चलना चाहती थी और उसके अपोजिट में कुछ काम करते हैं, उसके खिलाफ में कुछ काम करते हैं, तो उस चीज़ को हमारी बॉडी अपोज करती है. सो जब एकदम से स्पीड बढ़ा दी है तो उसको अपोज करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो एक्शन लेती है तो वो बैकवर्ड एक्शन लेती है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ
Complete the following tables. In the first table, the mass, volume and density is given. In the second table, density of metal, density of water and relative density is given. In the third table, weight, area and pressure is given. So we know the relation between mass, volume and density, that density is equal to mass upon volume. Relative density, we know the relative density is equal to density of substance divided by density of water, and the pressure is equal to weight upon area. So we have to write the values given here in these formulae, and you have to write the answer here. And this is the homework for you because I have explained it. We will provide the solution of this exercise in WhatsApp group. Okay. Now question number 6 is density of a metal is 10.6 into 10 cube kilogram per meter cube. Density of a metal is given here and we have to find the relative density of a metal. So we know the formula for the relative density is density of substance divided by the density of water. Density of substance is given, density of a metal is given here 10.8 into 10 cube kilogram per meter cube divided by density of water has a standard value and that is 10 cube kilogram per meter cube. So 10 cube will be cancelled from numerator and denominator and we will get the answer as 10.8. It has no unit, relative density has no unit because it is the ratio of two similar quantities. So the answer is 10.8. Okay. Now the next question is volume of an object is 20 centimeter cube and the mass is 50 gram. Density of water is 1 gram per centimeter cube. Will the object float on water or sink inside the water? So volume of object is 20 and the mass is 50 gram. Density of water is also given 1 gram per centimeter cube. 1 gram per centimeter cube. Will the object float on water or sink in water? So first of all we will find the density of the metal, density of the object. So density of the object will be equal to mass upon volume. Mass is 50 gram upon volume is 20 centimeter cube. We have not converted gram and centimeter cube because both the units are in the same units, CGS units. So both the quantities are in the same units, that is CGS. So there is no need to convert it into SI unit because all the quantities are in the same unit. So we are not converting it into SI unit. Okay. So 50 by 20 is 2.5 gram per centimeter cube. Okay. So here the density of substance is 2.5 and density of water is given here 1 centimeter cube. We know that if the density of substance is more than the density of a liquid, then the substance will sink inside that liquid. अगर डेंसिटी ज़्यादा है मतलब क्या है कि सब्सटेंस भारी है, वजनदार है, और वजनदार चीज़ क्या होती है कि डूब जाती है, सिंक हो जाती है. सो हियर ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर. हियर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 2.5 and which is greater than the density of water. So the object will sink inside or within in the water. Okay, so it will sink in the water. Okay. Now the next question, that is question number 8, is volume of a plastic covered sealed box is 350 centimeter cube and the box has a mass 50 gram. Will the box float on water or sink inside the water? So till here the question is same as question number 7. So this is homework for you. Here the volume for plastic is given, that is 350 centimeter cube and the box has a mass 500 gram. Mass is also given and volume is also given. Will the box float on the water or sink inside the water?
हमें बताना है कि फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should find the density of that plastic box. You should find the density of that box, mass upon volume. From this formula, mass is given as 500 divided by 60, and you should compare it with the density of water, that is 1 gram per centimeter cube. Okay, if this density is greater than the density of water, then it will sink, and if this density is less than the density of water, then it will float on the surface. And next, the question is that what will be the mass of the water displaced by the box. कितना पानी बाहर गिरेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो जितना वो बॉक्स अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर गिरेगा. तो मास बॉक्स का वॉल्यूम क्या था 350. So this amount of mass will be displaced, this amount of water will be displaced by the box. So the mass of the water will be equal to 350 kg. Okay,